the general plane motion, as we have stated earlier as well, कि general plane motion की definition आप में से कोई एक student बता सकता है? What is this general plane motion? Anyone volunteer who want to define what a general plane motion या complex motion is? सर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशंस हो रहे हो. Simultaneous translation and rotation will result in general plane motion. So, in order to develop some mathematics, जैसे हमने translation की कुछ mathematics देखी, उसके बाद फिर हमने rotation की कुछ mathematics देखी, equations देखी. In order to develop the mathematics or kinematics of this general plane motion, kinematics क्या होती है कि we need to relate the displacement, velocity and acceleration of a rigid body which is undergoing general plane motion. So in order to develop the kinematics for such a rigid body, we need to first of all develop the velocity analysis of that rigid body. Now there are two different methods of performing the velocity analysis of a rigid body which is undergoing general plane motion. The first method is the relative velocity method, which is going to be discussed today. Why it is called the relative velocity method? Because we are going to use the same relative velocity equation which we have already stated in chapter number 12 in order to relate the velocities of various points on that rigid body which is undergoing general plane motion. The second method is the instantaneous center method, जो कि एक नई टेक्निक होगी आपके लिए. अगर हमें टाइम मिला तो प्रोबेबली हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड भी देखेंगे, लेकिन हम रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करने के बाद डायरेक्टली हम एक्सेलरेशन पे मूव कर जाएंगे ताकि इस चैप्टर के ये दो मेजर टॉपिक्स हम खत्म कर लें. उसके बाद नेक्स्ट वीक अगर टाइम बचा या उससे नेक्स्ट वीक टाइम बचा तो हम इंस्टेंटेनियस सेंटर को भी एक दफा जो है वो देख लेंगे. दिस रिलेटिव वेलोसिटी मेथड इज बेसिकली अ वेक्टर मेथड, सो इट इज मोर फिजिबल फॉर यू टू अप्लाई इन योर सब्सिक्वेंट कोर्सेज. जो instantaneous center method है, it is basically a scalar method of performing the velocity analysis of a rigid body undergoing general plane motion. बहरहाल हम दोनों methods को कोशिश करेंगे कि देखें. आज हमारा टॉपिक है relative velocity analysis of a rigid body which is undergoing general plane motion. Now, in order to understand this relative velocity analysis, let us consider a rigid body which is shown to you as this blue body. So, general plane motion, as we have already discussed, it consists of a simultaneous translation as well as rotation. So it is often convenient to view these components separately using a relative motion analysis. आपको अगर याद हो चैप्टर नंबर 12 में हमने relative motion analysis जब हम दो particles का कर रहे थे तो हमने दो set of coordinate axes जो है वो define किए थे. यहाँ भी हम almost वही कहानी करेंगे. We are going to define two set of coordinate axes. The first set, which is the fixed xyz frame of reference, it will be used to measure the absolute positions, velocities and accelerations. Whereas the second frame of reference, which is this x dash, y dash, it is going to be attached to the selected base point A, which generally has a known motion. The axes of this coordinate system are not fixed to the body, rather they will be allowed to translate with respect to the fixed frame. So we are going to consider a rigid body and we are going to use the same relative motion analysis which we have developed in chapter number 12 in order to perform the velocity analysis. Okay, now as far as the position is concerned, as earlier discussion, we are going to define two position vectors RA and RB, which defines the position of point A and point B. These are two different points on the rigid body. So RA and RB, since they are being referenced from a fixed origin, so they are basically known as the absolute position vectors. Now completing the equation as in chapter number 12, this vector RB should be equal to vector RA plus vector RBA. So the relative position equation is going to be RB equal to RA plus RBA, where RB and RA are the absolute position vectors of point B and point A, whereas RBA is the relative position of B with respect to A. Okay, now since this rigid body is undergoing general plane motion, it means that the displacement of both these points A and B is going to be different from each other. So at time t, this is the position of the rigid body which is shown to you. At time t plus delta d, this rigid body has moved to its new location in which both A and B undergoes different displacement. So this dRA and dRB are not equal to each other. थोड़ा सा इसको समझने के लिए let us consider this blank slide. I hope that this blank slide is visible to all of you. हम करते क्या है कि हम एक rigid body consider करते हैं. So this is the rigid body which we are considering,
and these are the 2 points A and B which are being marked on this rigid body, any 2 points on this rigid body. हम कहते हैं कि at time t, this is the position of this rigid body. Then at time t plus delta t, the new position of this rigid body is say this position, which is again ये आपके पास point A आ गया, ये आपके पास point B आ गया. So point A and point B at time t plus delta t have undergone different displacements dra and drb as shown to you in this figure. So ये दोनों points चूंकि different displacements कर रहे हैं, हम कहते क्या हैं कि इस simultaneous translation and rotation को हम break कर दें इसके ट्रांसलेटरी कंपोनेंट में और इसके रोटेशनल कंपोनेंट में. कैसे ब्रेक करें? मैं कहता हूं कि पहले ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी इतनी अमाउंट पे डिस्प्लेस हो गई है. सो सपोज मैं कहता हूं कि ये DRA आपके पास गिवन है. सो ये पहले मैं कंसिडर करता हूं कि बजाय साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन और रोटेशन के, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिजिड बॉडी हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय दिस अमाउंट व्हिच इज DRA. Then this whole rigid body rotated by an amount d theta with respect to the base point A. So simultaneous translation और rotation को मैंने इसके translatory component which is this component and rotational component which is this component, इसमें जो है वो divide कर लिया. और आखिर में इसकी ओवरऑल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं इसके इन दोनों कंपोनेंट्स को वेक्टोरिकली ऐड कर दूंगा, तो मुझे जो है वो पॉइंट बी की वेलोसिटी मिल जाएगी. यहां तक क्लियर है रेक को? उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे जाते हैं. मैं तो दोबारा समराइज कर दूं, इस साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन और रोटेशन को मैंने इसके ट्रांसलेटरी कंपोनेंट और रोटेशनल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया. मैंने कहा कि इंस्टेड ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, पहले ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी ट्रांसलेट हो जाती है बाय एन अमाउंट DRA एंड देन ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी रोटेट हो जाती है बाय एन अमाउंट d थीटा अबाउट द बेस पॉइंट A. ओके, नाउ राइटिंग दैट रिलेटिव पोजीशन इक्वेशन जो इससे पहले हमने पढ़ी है, RB which is the absolute position of B, it should be equal to RA which is the absolute position of A plus RBA which is the relative position of B with respect to A. Okay, now in order to find out the velocities, we are going to differentiate this equation with respect to time. So differentiating each and every term with respect to time, what does this DRB over DT become? Velocity of B. It would be the absolute velocity of B, which should be equal to DRA over DT, which represents the absolute velocity of A plus the relative velocity of B with respect to A. ठीक है, आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. ओके, नाउ अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो बेसिकली आपके पास ये VA किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट रिप्रेजेंट्स के पॉइंट बी में कितनी ट्रांसलेशन आ रही है. इन अदर वर्ड्स, इस रिजिड बॉडी में जितनी ट्रांसलेशन आ रही होगी उसके ट्रांसलेटरी कंपोनेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है VA. इसके मुकाबले में आपकी ये जो टर्म है विच इज VBA, ये इस रिजिड बॉडी में रोटेशनल वाइज क्या चेंज आ रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है. सिंस for this rotational aspect point B is in pure rotation with respect to point A, तो pure rotation के केस में भी हमने V वेक्टर का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ याद है अभी आज के लेक्चर में? In case of pure rotation, what was velocity vector VB? It was basically omega cross R. याद आया कुछ? In case of pure rotation, V vector is basically omega cross R. So yes, we are going to replace this VBA, चूंकि point B इसकी rotational aspects को cover कर रहे हैं. So since point B is in pure rotation with respect to point A for this rotational aspect, so we can replace this VBA by omega cross R. So omega is going to be the omega of this rigid body and R is going to be the position vector RBA, which defines the relative position of B with respect to A. So overall जो हमारे पास equation बनेगी for performing the velocity analysis is going to be this equation, which is the absolute velocity of B should be equal to the absolute velocity of A plus the
velocity of b with respect to a which defines the rotational aspect, so it can be replaced with omega cross r. So अगर हम इस rigid body को देखें जो कि general plane motion कर रही थी, इसको हमने इसके translational component which is represented by va and rotational component which is represented by omega cross r, उसमें जो है वो divide कर दिया. So जब जब कोई भी rigid body जनरल प्लेन मोशन कर रही होती है और आपसे कहा जाए कि आप इसकी relative velocity एनालिसिस, relative velocity इक्वेशन की मदद से एनालिसिस करें, तो आप इनमें से किसी एक पॉइंट को जिसका मोशन आपको नोन हो उसको अपना बेस पॉइंट बना लें और ये relative velocity इक्वेशन जो है वो अप्लाई करें इन इट्स ट्रू सेंस. सो VB इक्वल टू VA प्लस ओमेगा क्रॉस R की फॉर्म में जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको velocity ऑफ पॉइंट B जो है वो नोन हो जाएगा. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so we are going to stop at this point.